This is the leftover part of the decomposition reaction. So three parts we already done here, and the next another one is the photochemical decomposition reaction. What is in the photochemical decomposition reaction? Decomposition reaction which takes place on absorption of light are called photochemical decomposition reaction. Simple example is the photosynthesis, as you know from the lower classes also. It is in presence of the chlorophyll and sunlight. Sunlight is especially because we are just going to tell here about the light. Photo means light. Photo represent here for the light rays, okay, which takes place when absorption of the light are called photochemical decomposition reaction. In case I am just taking first the second one example because I started from this only, the photosynthesis. Here is the CO2 carbon dioxide plus water in presence of the chlorophyll and sunlight make a food. The food product it is glucose, clear, and H2O and CO2, ठीक है. तो वहाँ पे हमने कहा था कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं, तो देयर इज द एग्जांपल ऑफ द दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. द अनदर वन इज द decomposition of silver chloride in the presence of light. When silver chloride is exposed to the light, silver chloride, clear, is exposed to light, it decomposes to form silver metal which is grayish in color and chlorine gas. Grayish color, okay, silver chloride, silver and the chlorine, clear. This is the one, another one, photochemical decomposition reaction. The next one is the electrolytic decomposition reaction or electrochemical reaction. What is in it? So here it is. Decomposition reaction which takes place when an electric current is passed through the compound in molten state or in aqueous solution. State are called electrolytic decomposition or electrochemical reaction. Electrolysis of water, ठीक है. What is it? Here the electrolysis of water, वहाँ पे acidified जो water होता है, इसको जब भी क्या किया जाता है, electrolyte decomposition of water when an electric current is passed through acidified water. It is acidified water and electric current जब इसे pass करवाया जाता है, तो what will happen? It break into two different substances. What are they? H2 and O2. Clear? So this is electrolytic or electrolytic decomposition reaction, electrochemical reaction. Clear? The last one is the electrolytic one, decomposition of molten sodium chloride. So what happened with this? It is when the electrolytic decomposition of molten sodium chloride, when electric current is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium metal and chlorine gas. Clear? Here is another one example of the sodium chloride and the sodium chloride. It's when it passed through with the electric current, so sodium and chloride, chlorine gas is released. And ये कहाँ पे डिकम्पोज होते हैं? अगर डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू, वेट अ मिनट, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है तो द हियर इन केस ऑफ द S2 it just be decomposed on the cathode and O2 it is in anode. ये एनोड पे हो जाएगा और ये कैथोड पे. सेम हियर इन केस ऑफ द सोडियम, हियर ये भी आपके कैथोड पे हो जाएगा डिकम्पोज एंड हियर इट इज एनोड. ये जाके वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे. क्लियर? सो होप इट्स क्लियर टू यू. जो आपका ये लेफ्ट ओवर पार्ट था आपके फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. फर्स्ट टू काइंड ऑफ रिएक्शन वी ऑलरेडी डन. फर्स्ट वन इज़ द कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ द डिकम्पोजिशन वन. इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपके पास डबल कॉम्बिनेशन वाला और एक और रिएक्शन आपके पास रहेगा, वो हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको कंप्लीट में करवा दूंगी. क्लियर? सो थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. इट वाज द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉट द डबल कॉम्बिनेशन. डिकम्पोजिशन वन एक ये आपके पास रह जाता है एंड द अनदर वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन. ये दो रिएक्शन आपके पास अभी रहता है. ये मैं आपको टाइम मिलते ही मैं आपको ये वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूँगी. क्लियर? Thank you. Have a nice day.